Namaskar. Once again, I welcome you all in the virtual class. Today we are going to discuss the topic of class 12, and this topic or this class is of English literature. And in 12th class in English literature there is a novel that is Inside the Haveli. The novel Inside the Haveli, written by Rama Mehta. First of all, we should know about Rama Mehta. Rama Mehta is a very great writer. Inside the Haveli is an English language novel written by Rama Mehta. She was born in Nainital in India in 1923. She did her postgraduate in philosophy from Delhi University, Indian Foreign Service. So, after completing his post graduation in philosophy, Rama Mehta was selected in Indian Foreign Service, that is also called IFS. And after getting the job, she was married to Jagat Singh, and after some time, she had to resign his post as a diplomat. After the resignation or after the marriage, she started to sociology. And you know that in 12th standard in English literature, this novel is introduced. This novel has been included for the teenagers to aware them about the culture, about the history, about the tradition, about the values of our society. So, after resignation, Rama Mehta started to study sociology, values and tradition, and she also studied socio-political life, history, culture, rural life, etc. She was died in 1978, and you can say that main theme of her work, that first we want to introduce Rama Mehta because Rama Mehta was a sociologist, and the main theme of her work is women in tradition bound but rapidly changing in India. You know, Rama Mehta describes the tradition and the social life of the society in this novel. You can see Rama Mehta also completed his study on Hindu nuclear family, and on this study and on this great novel Inside the Haveli, she was awarded Sahitya Akademy Award in 1979. Now, just I want to tell you, my dear students, students of 12th class, that this novel is very important for all of us because we can study our culture and history in this novel. And the writer or the author Rama Mehta emphasizes the values of the society in the this story. You can say now let us come forward about the story of this novel. That the story of the novel depicts conflict between tradition and modern life faced by women belonging to the middle and upper classes. So let us see the word
here that the story of inside the Haveli depicts means describes the conflict. As you know, conflict is such a mental state in which the person cannot decide what is right and what is wrong. So, when the novel was written, at that time, the real situation or the of the society, so the women were in conflict between tradition and modern life, faced by women belonging to the middle class, upper classes, and in this novel, the author describes such a situation of the different classes, no doubt reflecting the experience of the author herself. In this novel, the author depicts a conflict. Conflict means such a situation that one is gripped and it is very difficult to decide which is right. For example, here the point is the tradition and modern life. So this is a conflict between tradition and modernity. Now let us see. You can see that the story of inside the Haveli of the novel revolved around a young girl. The story of this novel revolved around a young girl from Mumbai, India. She marries a son of former Indian prince, and post-marriage she located to Udaipur. So, how the story begins, we will go into detail of this novel, of this story. That first of all, I want to tell you that in this story, the Rama Mehta emphasizes the modernity versus tradition versus modernity. So in this story, you can see that this story is around a girl that is a highly educated and a highly modern girl and marries to a traditional family of Rajasthan that is in Udaipur. So when and the main character of the story, and she is Geeta. The name of the main character of the story is Geeta. When Geeta is upbringing in the upbringing in the modern family of Bombay, and after that her marriage, she has to go to Udaipur for his for her in-laws family. So now you can see that here friends, my dear students, I want to clear that the modernity versus tradition. So in this novel, one thing more, there is a question in your mind. Can you ask? You may ask that what is a novel? So now it is clear. You should write this. A novel is a form of text written as prose rather than words. Novel means new. So content of novel looks factual. So fact of information, all flight of imagination of the writer, though it may be inspired by the real life. So in this story we will discuss all the points in detail. That first of all, we can see that in this story the writer Rama Mehta emphasizes her
real life, and he depicts in her real life. Okay, so students, in this way we can move uh, from this point that about Rama Mehta. As you know that in this story the main character is Geeta. Geeta is the main character. She is a well-educated girl, and lived and brought up in Mumbai. So, and after marriage, she comes to Udaipur in a royal family. Her husband is a scholar person, and her grandfather or in-laws family is a royal family. So, in this way, the story moves, and this is all about the introduction of Rama Mehta and the novel inside the Haveli. Okay, thank you very much. Thank you very much. Once again, I want to say that in these classes, इन क्लासेस में मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई हैं. कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं तो आप हमें दो सवालों का जवाब दीजिए कि आप एक तो हमें ये बताएं कि अंग्रेज़ी के लिए कौन सी बुक्स, विशेष रूप से ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं जिससे हम तैयारी करके और हम अपने मैटर को तैयार कर सकें. और दूसरा, एक अंग्रेज़ी बोलने के लिए मेरे पास बार बार जो क्वेरी आ रही है कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इन दोनों सवालों का जवाब मैं यहाँ आप लोगों को देना चाहूँगा इसी क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हैं. तो इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले भी अच्छी तरह से समझेंगे. उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके पास कई बुक्स हो सकती हैं. जैसे जहाँ तक बात स्पोकन इंग्लिश की है और अंग्रेज़ी बोल चाल की है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि कोई भी भाषा को जब हम बोलना सीखेंगे तो उसी भाषा में हमें बोलना पड़ेगा. तो मैं आपको इस अंग्रेज़ी बोलने के लिए और उसमें जो ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए जो बुक सजेस्ट करना चाहूँगा वो रेमंड मर्फी की बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि रेमंड मर्फी ने 3 बुक्स निकाली हैं. एक तो है बिगनर के लिए. बिगनर का मतलब जो अभी अंग्रेज़ी बोलना जो शुरू कर रहे हैं या जो अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए उनकी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की बुक है. ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की बुक, ये बुक बिगनर्स के लिए है. जो बिगनर हैं वो इस बुक में से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम बिगनर लेवल कहते हैं. ये कोई 0 लेवल नहीं होता है, इसमें बिगनिंग होती है. उसके बाद में एक आता है इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल में वो जो स्टूडेंट्स जिनका बिगनर से लेवल आगे आ गया है इंग्लिश में और वो इस ग्रामर की बुक में से तैयारी कर सकते हैं. ये रेमंड मर्फी की इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, एंड दिस इज रिटन ऑन स्पोकन स्टाइल. एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक you will not be to attend any classes, you know. This is very good book and exercises is there. तो आप वहाँ पर ये एक स्टूडेंट के पढ़ने के लिए है कि वो अपना पढ़ाई करते करते उसमें एक्सरसाइज भी कर ले, तो दोनों काम उसके स्पोकन एंड रिटन एक साथ होते हैं. इसी तरह से इसकी एक बुक और होती है जो एडवांस्ड लर्नर के लिए होती है. तो इस तरह से ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, ये रेमंड मर्फी की है.
इसी तरह से मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करना चाहूँगा जो रेन एंड मार्टिनेट की है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको भी मतलब इस बुक का नाम है, आप इस बुक का नाम नोट कर सकते हैं। इस बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये हाई स्कूल के लिए होती है और ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एजी थॉमसन एवी मार्टिनेट के लिए है। ये बुक भी बहुत अच्छी है। जो बिगिनर से इंटरमीडिएट में आ गए और इंटरमीडिएट से जो आगे जाना चाहते हैं, ये सभी मोस्टली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ग्रामर के लिए। तो ये गाइड टू पैटर्न्स एंड यूजेस इन इंग्लिश ए.एस. हॉर्नबी, आप इस बुक को भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बुक यहाँ भी अवेलेबल है, आपको ये बुक यहाँ मिल जाएगी। और इसका नाम है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड रेफरेंस की। ये बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 1991 में पब्लिश की थी। अगर आपको ये बुक मिल जाती है तो बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही अफोर्डेबल में, बहुत ही हाई मैटर, बहुत ही अच्छे ग्रामर के साथ ये बुक है। इसकी बहुत ही कम इसकी कोर्स है। इसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश यूजेस एंड लैंग्वेज डॉक्टर के.एन. बकाया की एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया एक बुक बहुत ही अच्छी है जो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, ये माइकल स्वान की बुक है, और इस बुक से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये ग्रामर की कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको बताई। इसी तरह से एक सवाल मेरे से और पूछ रहे हैं बार बार कि अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए। तो अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अभी जो हमारी इंडियन इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो टीचर्स हमारे यहाँ पर दो अप्रोच काम करती हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको हम ट्रांसलेशन मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, जिसमें आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसमें जैसे ये होता है कि राधा स्कूल जाती है, तो उसमें जो टीचर उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताता है कि राधा गोज टू स्कूल। इसी तरह से एक ये अप्रोच है, ये इसको हम इसको मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, ट्रांसलेशन मेथड अप्रोच कहते हैं। इसी तरह से जो डायरेक्ट अंग्रेजी बोलने के लिए एक अप्रोच है, जो डायरेक्ट अप्रोच है जिसमें आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से या जिनको स्टार्टिंग से इंग्लिश में आते हैं, उनके लिए ये अप्रोच ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो चूंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को डील करता हूं, तो हम हमारी दोनों अप्रोच रखेंगे, बट माई फोकस विल बी ऑन स्पोकन इंग्लिश, दैट इज डायरेक्ट मेथड। इफ यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश from the beginning, then one day you will learn how to speak in English, how to speak effectively, how to speak fluently. Okay, ये तुम्हारे दोनों क्वेश्चन का मेरा ये जवाब है। और आज हमने इनसाइड द हवेली, जो रमा मेहता द्वारा बहुत ही अच्छा एक नावल जो +2 इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, और ये हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आने वाले लेसन्स भी इसमें प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।